In this video, we will solve this question, and the question is integration of tan inverse x from 0 to 1. So this integral is a definite integral, and this question is based on integration by parts. So to avoid any confusion, we will first solve this integral without the limits. So first we will solve integration of tan inverse x, and we have to use by parts, but you can clearly see यहाँ पे सिर्फ एक ही function है, which is tan inverse x. But we need two functions u and v, first function and second function. So what we can do here is we can write this tan inverse x as tan inverse x into 1. इसको हम लिख सकता है tan inverse x into 1 and dx. So now we have two function tan inverse x and 1. So whenever we use this 1, we have to consider this 1 as second function, and यहाँ पे आइलेट को यूज नहीं करना है टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन. डायरेक्टली जो 1 है उसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करना है, एंड जो दूसरा फंक्शन रहेगा वो फर्स्ट फंक्शन. ठीक है. सो हियर tan inverse x is a first function and 1 is a second function. And what was the formula for integration by parts? So integration of u dot v is equals to u. Here u is a first function and v is a second function. So first function into integration of second function minus integration of derivative of first function into integration of second function. So ये है by parts का formula. Now we have to apply this formula here. And यहाँ पे first function tan inverse x है, so u क्या है tan inverse x, and second function 1 है, मतलब v है 1. So formula apply करने पर we will get first function into integration of second function, which is 1, integration of 1 dx, minus integration of derivative of first function into integration of second function. So ऐसे formula apply करना है. Now we know integration of 1 with respect to x. Integration of 1 with respect to x is x, and यहाँ पे tan inverse x into minus integration of what is derivative of tan inverse x. Derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square into again integration of 1 is x and dx. ठीक है, ये dx. Now we can rewrite this as x into tan inverse x minus integration of x into 1 by 1 plus x square will be x by 1 plus x square and dx. Now we have to solve this integral, and to solve this integral we will use substitution method. For that we will assume this 1 plus x square as t. So let's say t is equals to 1 plus x square, and derivative of t with respect to x will be 2x, क्योंकि derivative of constant is 0 and derivative of x square is 2x. So dt by dx is 2x. From here I can find x dx, क्योंकि यहाँ पे already x dx है, and I can get x dx from here. So यहाँ पे जो dx है इसको multiply कर सकता, so ये बन जाएगा dt equal to 2x dx, and here I got x dx. अब हम 2 को divide कर सकता, so 1 by 2 dt will be equal to x dx. So we will substitute dt by 2 in place of x dx. So this will become equals to x into tan inverse x minus, ये as it is रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह पर 1 by 2 dt divided by t. So x dx की जगह पर 1 by 2 dt and 1 plus x square की जगह पर t. Now ये जो 1 by 2 है कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल सकता, so this will become x into tan inverse x minus 1 by 2 integration of dt by t. Now what is integration of 1 by t? Integration of 1 by t with respect to t will be log t. So x tan inverse x minus 1 by 2 integration of 1 by t will be log t and plus c. क्योंकि integration of 1 by x dx is log x, integration of 1 by x with respect to x is log x, वैसे ही integration of 1 by t with respect to t will be log t. And what was t? t was basically 1 plus x square. t was 1 plus x square. So यहाँ पे t की जगह पर 1 plus x square substitute करने वापस. So the answer will be x tan inverse x minus 1 by 2 log 1 plus x square plus c. ठीक है, सो इसका सोल्यूशन है ये.
सो ये था इंडेफिनिट इंटीग्रल। यहां पे हम इसको सॉल्व किया विदाउट द लिमिट्स, हम लिमिट को रिमूव करके इसको सॉल्व किया। नाउ वी विल पुट लिमिट्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, ये था लिमिट्स। एंड व्हाट वाज द फंक्शन? फंक्शन वाज x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो जब अपर लिमिट पुट करेंगे एंड लोअर लिमिट से जब माइनस करेंगे तो ये c कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर c लेने का जरूरत नहीं है। एंड द लिमिट्स आर 0 and 1। सो आफ्टर इंटीग्रेशन ऐसे ब्रैकेट डालना है। नाउ वी विल पुट अपर लिमिट, then minus, then we'll put lower limit. So if I put upper limit, I will get 1 into tan inverse 1 minus 1/2 log 1 plus 1 square. तो यहाँ पे हम क्या किया, 1 पुट कर दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 एंड यहाँ भी 1 पुट कर लिया। नाउ लोअर लिमिट पुट करना है विच इज 0। सो माइनस लोअर लिमिट पुट करना है 0 इंटू tan inverse 0 minus 1/2 log 1 plus 0। सो इफ यू सी दिस, ये 0 बन जाएगा क्योंकि ये पूरा वैल्यू 0 है। 0 इंटू tan inverse 0 इज 0 एंड 1 प्लस 0 इज 1 एंड log 1 इज 0। सो ये जो पूरा टर्म है ये मेरे को 0 मिलेगा। सो ये जो पूरा टर्म है इसका वैल्यू क्या है, 0 है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट। tan inverse 1 is pi/4, pi/4 into 1 is pi/4 माइनस 1/2 log 2, ये क्या है, 2 है, सो log 2। सो इसको सॉल्व करने पर वी गॉट दिस आंसर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। सो इंटीग्रेशन ऑफ tan inverse x फ्रॉम 0 to 1 is pi/4 minus 1/2 log 2। दिस इज द फाइनल आंसर। So this is how you solve the definite integral which was based on integration by parts. So this is it for the video. We will solve more questions in the upcoming videos. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.